पासपोर्ट सेवा दिवस एवं पासपोर्ट अधिकारी सम्मेलन में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ. We have all gathered here to celebrate the Passport Seva Divas, which is also resonating across the country in the passport offices to mark the enactment of the Passport Act in the year 1967. At the very outset, I request our esteemed Foreign Secretary to kindly welcome our Honorable Minister of External Affairs with a bouquet of flowers. Thank you, Madam. Now I request our Chief Passport Officer to kindly welcome our esteemed Foreign Secretary with a bouquet of flowers. We now extend our heartfelt welcome to our SSAD and CPV, and I request our Chief Passport Officer to kindly welcome Shri R. Swaminathan with a bouquet of flowers. Thank you, sir. And on behalf of the CPV division, I extend our heartfelt welcome to our Chief Passport Officer, Shri Muktesh Kumar Pardesi, with a bouquet of flowers. Thank you. Now I request our Honorable Minister of External Affairs to kindly inaugurate the Passport Seva Divas and the Passport Officers Conference by lighting the ceremonial lamp. I request all the dignitaries present on the dais to kindly join in. Thank you. I now request our esteemed SSAD and CPV, Shri R. Swaminathan, to kindly give his welcome remarks. Sir. नमस्कार, माननीय विदेश मंत्री जी, विदेश सचिव महोदय, देवियों एवं सज्जनों, मैं पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं खास तौर पर माननीय विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा जी एवं विदेश सचिव श्रीमती सुजाता सिंह का स्वागत एवं धन्यवाद करना चाहूँगा, जो आज मुख्य एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित है। मैं सभी अतिथियों एवं सहयोगियों को स्वागत करता हूं। A very special welcome to the past Chief Passport Officers, representatives of police, and our partners from TCS, NIC, UIDAI, SBI, and SPCMIL, and also a very special welcome to the media representatives. At the outset, let me reiterate that the Ministry of External Affairs attaches very high importance to the working of the passport officers, as these are the windows of the ministry to the general public. We are committed to the delivery of passport services to our fellow citizens in a timely, transparent, and in a comfortable environment. Over the last 6 decades, there has been a considerable expansion in both the scope
and volume of the passport-related services. Last year, more than 71 lakh passport services were rendered in India, besides nearly 14 lakh services by our missions abroad. The number of passport services is likely to cross 1 crore mark next year. Since the beginning of this year, till date, over 38 lakh passport service applications have been processed in the system, and the revenue from passport services is about rupees 1900 crore. Honorable EAM, the last 3 years have seen a tremendous transformation in passport issuance through the implementation of the Passport Seva project, an innovative e-governance initiative aimed at delivering passport-related services to the citizens in a speedier, more transparent, secure, reliable, and comfortable manner within defined service levels. The project is being executed in a public-private partnership mode with Tata Consultancy Services as the service provider. Nearly 2,400 officials of the Central Passport Organization, a subordinate office of the ministry, along with over 2,500 staff from the service provider, work together to provide passport services to the citizens of India. Under this project, 77 Passport Seva Kendras have been set up across the country as extended arms of the 37 passport offices to provide passport services. The project has brought in a radical shift in the way passport services are delivered. The system is also available to all our missions and posts abroad, immigration checkpoints, and police departments, providing them access to real-time passport data. At present, approximately 33,000 passport-related applications are being processed every day. Security has been given special attention in the project. The accountability of the employees as well as the service providers' personnel in respect of any task performed in the system is ensured through biometric login, user ID password, and digital signatures. A multilingual national call center has been set up which operates 24/7 in 17 languages to cater to dissemination of information about various passport services, grievances handling, and citizens' feedback. Also, a help desk has been set up which can be accessed by citizens through the passport portal for ascertaining status, posting suggestions, and filing grievances. Citizens can also dial a toll-free number to seek information. The ministry has taken several measures to make the passport issuance system simpler and speedier for convenience to the public. These include strengthening of the public grievance redressal system, conducting passport melas, camps, and adalats, revamping and constant upgrade of passport portal to make it more citizen-friendly, and the mobile passport Seva application, which provides passport service-related information. However, the time taken for police verification continues to remain a challenge. We have been constantly engaging with the state governments to upgrade their systems to speed up police verification. We are aware that the success of any organization or project depends on a trained, accountable, and motivated workforce. In this regard, several welfare steps, some of them for the first time, have been taken to improve the service conditions of Central Passport Organization personnel by restructuring and expanding the cadre, faster promotion, and implementation of a productivity-linked incentive scheme. In the last 3 years, we have conducted departmental promotion committees at regular intervals, and over 66% Central Passport Organization personnel have benefited from fast-track promotions. We are also setting up a training and research center to upgrade skill sets of the Central Passport Organization personnel to improve their productivity. In addition, with the aim to provide more access points to public for passport services, the ministry is working on setting up 16 Passport Seva Lagu Kendras across the country, especially in the Northeast. With a view to address the challenge of digital divide in the country, especially in rural areas, the ministry, in association with Common Service Center, E-Governance Services India Limited, which is promoted by the Department of Electronics and Information Technology, has facilitated online filing of passport applications through the vast network of over 1 lakh common service centers across the country, particularly in the rural areas. The common service centers are the delivery points for government services in the areas of agriculture, health, education, banking, insurance, pension, and utility bill payments to rural citizens at their doorstep. The passport-related services have now been added as part of their bouquet of services. The common service centers facilitate filing and uploading of passport application form, payment of fee, and scheduling of appointment for visit to the Passport Seva Kendra at a nominal charge of 100 rupees. The services through common service centers are available throughout the week, including during the weekend.
The work for co-opting speed post centers and head post offices for online filing of passport application is also at an advanced stage. In addition, work is also progress on integration of missions posts with the Passport Seva system. We are also working on integration with other e-governance initiatives such as crime and criminal tracking network system, immigration visa on foreigners registration and tracking, national e-governance service, delivery gateway, and e-migrate. Honorable EAM, I want to report to you that whole of yesterday, all the passport officers were engaged in brainstorming sessions with the central theme of citizen-centric approach, and particularly how we can further simplify the processes and procedures, as well as to do away with redundant procedures. We have already identified a number of them. I have asked the passport officers to further brainstorm within the next 2 weeks and identify at least 10 suggestions each for further simplification to enable us to give quality services and on time, which is required by every citizen of India. On this day, Honorable External Affairs Minister, we pledge ourselves to improve our service delivery under your able leadership and guidance. Dhanyavad. Thank you, sir. Now I request our esteemed Foreign Secretary, Srimati Sujata Singh, to kindly give her address. Ma'am. Honorable Minister for External Affairs, Srimati Sushma Swaraj, distinguished guests, colleagues of the CPV division and passport offices, friends from the media, gentlemen, ladies. First, my very hearty greetings on the occasion of Passport Seva Divas and welcome to the Passport Officers Conference 2014. My colleague, Sri Swaminathan, has already given you an overview of the passport issuance system. As you are aware, the Passport Seva project has brought in a paradigm shift in the way passport services are delivered by the Ministry of External Affairs to the citizens of India. Traditionally, paper applications were submitted and the entire process for granting of passports was manual, including the interface with other stakeholders involved in the process. Applicants or their representatives had to queue up at the passport offices, resulting in congestion and confusion. There were incidences of lack of transparency, delays, and errors in passport issuance. In the new system, applications are entered online, payment of fees is also online, all supporting documents are scanned and uploaded upfront along with the applicant's photograph and biometrics. The verification of documents and the granting decisions are taken in the presence of the applicant, who is informed of the decision in writing. This has brought in transparency and streamlined the processes, resulting in faster and error-free issuance of passports. The erstwhile system had variations across passport offices. The new system has standardized processes implemented across the country. The system is also available to 183 missions and posts abroad, the immigration checkpoints and the police department, providing them access to real-time passport data. I'm glad to inform you that the average time for issue of passports on an all-India basis is 14 days for normal passports, excluding the time taken for police verification, and 5 days for Tatkal passports. Tatkal passports are nearly 7% of the total volume. It is true that sometimes some offices are not able to adhere to these deadlines that we have set for ourselves. In each such case, we have a system whereby we look at the complaints that are received and ensure that steps are taken
to rectify any delays. May I elaborate a little bit on the police verification that plays an important role in the timely dispatch of passports. The All India average for the number of days taken to complete the police verification is 47, and about 40% of the police verifications get completed within the desired time limit of 21 days. Policing being a state subject, the ministry has been requesting the state and UT governments to speed up the requisite processes and to invest in the necessary infrastructure to shift from manual mode to the preferred district police headquarters model. In a meeting with the Chief Secretaries on 13th March 2014, I had impressed upon them the criticality of police verification. A presentation on police verification was also made by the Joint Secretary PSP and Chief Passport Officer at the conference. A draft standing operating procedure for conducting police verification was circulated amongst the Chief Secretaries so that they could consult the respective Home Secretaries and Directors General of Police and implement the suggested measures. We're also working on a detailed manual on police verification for passports. During interactions of senior officers of CPV division with police officers, the urgency in police verification, the need to have quick responses is emphasized. The passport officers also keep in touch with local police officials to expedite the PVRs. The efforts have shown results as PVRs from Delhi, Andhra Pradesh, Telangana and Haryana are received between 13 to 19 days on an average. Kerala and Chandigarh take 24 days. The rest of the states take a little longer. Constant efforts by the ministry have resulted in more and more districts switching over to the preferred district police headquarters verification model. At present, out of 725 total police districts in the country, 453 districts have fully moved to DPHQ models. I have asked the service provider to develop a mobile-based app which could be utilized for on-the-spot verification and transmission of the same to passport issuing authorities. The hardware for this purpose would, however, have to be provided by the concerned state and union territory police administration. We would continue our efforts with state and union territory governments to bring down the time taken in police verification, which is one of the prime reasons for delay in timely issuance of passports. The close interest of the Parliament in passport services is affirmed by a large number of Parliament questions, inspections and study visits by several parliamentary committees in the past 2 years. In particular, the Standing Committee on External Affairs has keenly monitored the progress made by the Passport Seva program in its sittings, as well as through visits to several passport offices and PSKs. The Estimates Committee has also studied the PSK operations and expressed satisfaction at the services provided to the citizens. I would also like to inform that a Central Public Information Officer has been appointed in every passport office to provide information to applicants under the Right to Information Act. From 1st July 2013, the CPV division has been operating a separate section in the Government of India RTI portal to receive online RTI applications pertaining to passport offices and CPV division. A total of about 4,600 online and postal RTI applications were received and attended to by the division during the period 1st January to 31st December 2013. I would also like to add that passport services to nearly 10 million Indian citizens worldwide are rendered by our 183 missions and posts. It is one of the most important services that we provide to our nationals. The Gulf region itself accounts for close to 5.5 million Indians. During 2013, Indian missions and posts
abroad rendered about 14 lakh passport and related services. Two countries, namely Saudi Arabia and the UAE, accounted for about 45% of total services abroad. Our priorities in the year 2014-15, with a view to further improve passport services, include: 1. Review of Passport Rules 1980 to give legal effect to recent procedural changes. 2. Updation of the Passport Manual 2010. 3. Review of Tatkal procedures. And 4. Issues relating to passport applicants from Nagaland and Jammu and Kashmir. We are also working on: 1. Information security management policy. 2. Procurement of high-speed passport printers. 3. Introduction of new generation ICAO compliant e-passports. And 4. ISO certifications for the project. I'm confident that the high impact initiative of this passport Seva will immediately contribute to making the government services accessible to every Indian through common service delivery outlets and ensuring efficiency, transparency, and reliability of such services at affordable cost. The Honorable Minister for External Affairs has, in the short time since she has taken over, taken a deep interest in the working of our passport offices and how we can further improve our services, especially to people who are not in a position to get passports done through the normal channels and are in some difficulty in getting their voices heard. We have any number of procedures. We have Facebook, we have Twitter, we have many accounts whereby an Indian citizen can convey to anybody in the CPV division, but still, in spite of that, we still have cases where there seems to be no channel towards getting a faster service in the time promised. So you had a very productive meeting about a week back, and where several gaps, loopholes, and lacunae were identified and solutions sought to be put in place to address them. You will have seen yourself the interest that the Minister takes in the welfare of our nationals overseas, especially those in difficult circumstances. I'm sure that this Passport Seva Divas today will look at and implement ways and means of reaching out to those who are still not covered by everything that we have tried to put into place over the past few years. Honorable Minister, I'm firmly of the view that this function today, where the giving away of the Passport Seva Purashkars today by you, will provide added impetus and inspiration in attaining the highest levels of goals as desired by you and as set out in the Passport Seva mission statement under your guidance. Thank you. Thank you, ma'am, for giving us a comprehensive account of the passport services in our country. To commemorate the Passport Seva Divas, a lapel pin has been specially designed for the occasion. To renew our commitment to transform citizen services in our country, I take this proud privilege to request our Honorable Minister for External Affairs to kindly unveil the lapel pin. Thank you, madam. I would also take this opportunity to inform the House that these lapel pins have reached the cross-section of the country to all passport offices to be worn by the officials of the CPV division and the TCS professionals. And now I request the lapel pins to be distributed in the House
for all of us to take our pledge to renew our commitment to citizen services in the country. Thank you, ma'am. अब बारी है पासपोर्ट सेवा पुरस्कारों की। मैं माननीय मंत्री महोदया से निवेदन करती हूँ कि वे अपने हाथों से इन पुरस्कारों को प्रदान करें। I request the other dignitaries on the dais to kindly join in. Based on a well-defined criteria and recommendation of a cross-functional committee set up comprising of members of the MEA, NEGD, and STQC, the awardees have been decided. Yeah. Thank you, ma'am. I request all the members to also put on their lapel pins. In the institutional category, we have the Certificate of Excellence and the Certificate of Appreciation. In the A category, with a productivity of more than 2.5 lakh passports, the award goes to Passport Office, Cochin, Shri R.O. Sunil Babu. Please come onto the stage. Passport Office, Kozhikode gets a Certificate of Appreciation. Shri R.O. Sunil Babu. Passport Office Kozhikode for a Certificate of Appreciation, Shri K.P. Madhusudanan. Please come onto the stage. In the B category, we have Passport Office, Thiruvananthapuram, and Srimati C.B. Zoya is requested to come onto the stage and receive her certificate for excellence. Passport Office Coimbatore, in the B category, Shri S. Sashikumar is next in the line to receive his certificate of appreciation. Shri S. Sashikumar. In the C category passport offices, with a productivity of within 1 lakh passports, it is Passport Office Ranchi for the second time getting the certificate of excellence. Shri Sanatan, please come on. Passport Office Srinagar in the C category gets the certificate of appreciation. Shri Firdaus Iqbal, please come onto the stage. Thank you all, and I request the House to give a big hand of applause to these leaders who have helped in transforming the passport services across the country. Thank you. Now the backbone of the passport organization, the VOs, the GOs, and the CSEs. Ms. Vasanthi Tulasidaran, PGO, Passport Office, Madurai, to get a certificate of merit. Shri Ashok R. Sonkusare, PGO, PO Nagpur, please come onto the stage. Please be ready. Shri Ashok R. Sonkusare, PGO, Passport Office, Nagpur.
Shri A. Gangadharan, Superintendent, Passport Office, Hyderabad, to come next in the queue to receive his certificate of merit from our Honorable Minister. Shri S. Srinivasaya, UDC, Passport Office, Bangalore, is next in the line. Srimati Bhavana V. Wagale, UDC, Passport Office, Surat. Please be ready. Shri S. Srinivasaya gets the certificate of merit, and followed by him is Bhavana B. Wagale, UDC, PO, Surat. Shri Rakesh Kumar, UDC, PO, Nagpur, to get a certificate of merit. Please come onto the stage. Shri Anant K. Nizampukar, UDC, Passport Office, Mumbai. Please come onto the stage. Next on the line is Shri Prabhat Kishore, LDC, PO, Coimbatore. Now receiving the award is Shri Anant K. Nizampukar, UDC, PO, Mumbai. Shri Prabhat Kishore, please come onto the stage. Shri Ramesh Lakar, chauffeur print operator, PO, Guwahati. Please come onto the stage. Shri Ramesh Lakar. Now the citizen service executives. Srimati Gupta Mishra, CSC, PSK, Gorakhpur, is requested to come onto the stage. Miss Gupta Mishra, CSC, PSK, Gorakhpur. Shri Suraj TV, CSC, PSK, Mallapuram. CSC, PSK, Mallapuram, Shri Suraj TV to please come onto the stage and receive his award. And last in the category is Miss Rasmita Dalai, CSC, PSK, Bhubaneswar, to come onto the stage to receive her award. In addition to the certificates of merits, the TCS is also felicitating the VOs, GOs, and CSEs by giving them watches to encourage them for higher productivity and exceptional commitment to citizen services, and of course to ensure punctuality. With these words, I would request the House to again give a big round of applause to all the achievers, because when the achievers go back, they not only take back their certificates, they also take back your goodwill, your words and gestures of appreciation, and the good memories with them, which linger for years to come. And next comes the certificate of appreciation for the police officials who are an extended arm and a stakeholders in our competency. And first in the list is the Police Department of Delhi, Special Commissioner of Police, C.S.B.K. Singh, is requested to kindly come onto the stage and receive the award. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Next is the Police Department of Haryana, and I request Director General of Police, CID Haryana, Shri Anand Kumar Dhul, to kindly come onto the stage to receive the award. I request Additional DG of Police, Intelligence, Andhra Pradesh, Srimati A.R. Anuradha, to please come onto the stage to receive her award. Thank you, sir.
I now request the IG of Police Intelligence, Telangana, Shri B. Srivadhar Reddy, to kindly come onto the stage and receive his award. And let's give all the police officials a very big hand. For exhibiting outstanding zeal, dedication, exceptional level of service and commitment, it's none other than Shri Golok Kumar Shimli, Principal Consultant and Head Technology Passport Seva Project, who's being awarded with a certificate of recognition. Shri Golok Kumar Shimli, and let's give him a big hand. Thank you. I'd like to share a quote of Swami Vivekananda, who said, "With 500 men, the upheaval of India may take 50 long years, but give me as many women and Thank you, madam. I would now request our Honorable Minister of External Affairs to kindly give her inaugural address. Ma'am. हमारी विदेश सचिव श्रीमती सुजाता सिंह जी, विशेष सचिव डॉक्टर स्वामीनाथन जी, मुक्तेश जी, और आज की इस पासपोर्ट कॉन्फ्रेंस में भाग ले रहे और पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर उपस्थित सभी पासपोर्ट अधिकारीगण, हमारी सहयोगी संस्थाओं के प्रतिनिधिगण और अभी अभी पासपोर्ट सेवा पुरस्कार से पुरस्कृत हुए हमारे अधिकारी और कर्मचारी बंधु, आज हम पासपोर्ट सेवा दिवस मना रहे हैं, यानी उस एक्ट का जन्म दिवस जिसके तहत ये पासपोर्ट सेवा प्रारंभ की गई। आमतौर पर जब हम जन्म दिवस मनाते हैं तो उसमें केवल एक जश्न का माहौल होता है और इसीलिए संस्थाएं भी अपना दिवस एक आयोजन करके मनाती हैं, जिसमें चंद भाषण होते हैं, कुछ पुरस्कार होते हैं, लोग आते हैं, तालियां बजाते हैं और उठ के चले जाते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि कोई भी संस्था यदि अपना दिवस मनाती है तो दो काम हमें ज़रूर उस दिन करने चाहिए। पहला, कि पिछले एक वर्ष में हमारी क्या उपलब्धियां रहीं, और दूसरा, पिछले एक वर्ष में हमारी क्या कमियां रहीं। इन दोनों की समीक्षा यदि हम करते हैं तो इसके साथ ही हमें करना चाहिए कि उपलब्धियों को बढ़ाने की और कमियों को दूर करने की क्या योजनाएं हम तैयार कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि अगर ये दो काम हम करें कि अपने वर्ष की समीक्षा भी कर लें और आगे के निर्णय भी कर लें, तो फिर जन्मदिवस मनाना सार्थक हो जाता है। मुझे एक बात का संतोष है कि ये सेवा दिवस मनाने से पहले एक लंबी बैठक मैंने पासपोर्ट अधिकारियों के साथ, जिस पे मंच पे बैठे हुए सभी अधिकारी उपस्थित थे, कुछ अन्य भी थे, काफ़ी सार्थक चर्चा की। पर कुछ ऐसी चौंकाने वाली जानकारियां मुझे उस दिन मिली। जैसे हमने कहा कि पासपोर्ट मिलने में थोड़ी देरी हो रही है, कारण क्या है? एक कारण सामने आया कि पासपोर्ट की बुकलेट्स ही उपलब्ध नहीं है। अब अगर पासपोर्ट की बुकलेट्स उपलब्ध नहीं है तो आप किसी अधिकारी या कर्मचारी को विलंब से देने का दोषी नहीं मान सकते। पर पासपोर्ट की बुकलेट्स क्यों उपलब्ध नहीं है, जब इस गहराई में गई तो और ज्यादा अचंभा हुआ कि पासपोर्ट की बुकलेट्स केवल नासिक प्रेस से छपती हैं और नासिक के प्रेस को एक पासपोर्ट बनाने के लिए 4 ऐसे मटेरियल्स की ज़रूरत होती है जो विश्व के अलग अलग देशों से मंगाए जाते हैं, जिनके लिए ग्लोबल टेंडरिंग की जाती है।
MHA से सिक्योरिटी क्लियरेंस लेनी पड़ती है, और ये प्रक्रिया अपने आप में इतनी जटिल है कि बरसों लग जाते हैं। तो हमने कहा कि अगर ये प्रक्रिया जटिल है और बरसों लग जाते हैं, तो विवेक का तकाजा है कि जितना हमें चाहिए उतना ऑर्डर करने की बजाय कम से कम हम दुगना ऑर्डर करें। पिछले वर्ष में अगर 85 लाख पासपोर्ट हमने दिए तो इस बार का अंदाज़ा 1 करोड़ का बनता है। तो अगर एक वर्ष में 1 करोड़ पासपोर्ट दिए जाने हैं तो ऑर्डर हम कम से कम 2 करोड़ का करें, क्योंकि 1 करोड़ हमारे स्टॉक में रहे और महज इस वजह से हमारी सेवा कलेप्स न कर जाए क्योंकि हमारे पास बुकलेट नहीं है। तो हमने ये निर्णय किया कि हम जो ऑर्डर करेंगे वो ज़्यादा करेंगे और अपने स्टॉक में से कभी भी बुकलेट कम नहीं होने देंगे, ताकि हमारी पासपोर्ट की जो विलंब से होने की शिकायत है वो ख़त्म हो। इसी तरह से कई चीज़ें निकल करके आई। पुलिस वेरिफिकेशन में देरी होती है, कुछ राज्य जल्दी कर देते हैं, कुछ नहीं करते, तो उसमें एक इंसेंटिव स्कीम जो उन्होंने चलाई है उसका जिक्र किया, क्योंकि पुलिस वाले आमतौर पे कहते हैं कि पासपोर्ट के लिए वेरिफिकेशन करना हमारा बहुत प्राथमिकता का काम थोड़ी है, लॉ एंड ऑर्डर देखना, कानून व्यवस्था देखना वो ज़्यादा बड़ा काम है, तो उनकी प्राथमिकताओं में वो बहुत नीचे पड़ती है चीज़, तो इंसेंटिवाइज करने की स्कीम बनाई। तो मेरा आप सबसे ये कहना है कि हमने इसको शब्द दिया है सेवा, और आज हम सबने एक बैज पहना है सेवा। सेवा और ड्यूटी में बहुत फर्क होता है। जब हम किसी दफ्तर में नौकरी पर जाते हैं तो ड्यूटी करते हैं, 9 से 5 अगर हमारा समय है तो हम 9 से 5 ही, 9 बजे आते हैं, 5 बजे चले जाते हैं। 5 के बाद अगर कोई कहता है तो हम कहते हैं हमारा ड्यूटी का टाइम खत्म हो गया, कल 9 बजे आएंगे। लेकिन ड्यूटी और सेवा में ये फर्क है कि सेवा बिल्कुल नियत घंटे तय नहीं करती, सेवा में विनम्रता का भाव होता है, और सेवा अगर प्रसन्नता से की जाती है तो उसका दूसरे पर असर होता है। या तो हम अपने नाम के आगे हटा दें कि हम भी पासपोर्ट देने की एक ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि पासपोर्ट सेवा है और हम सेवक हैं और हम आम आदमी की सेवा कर रहे हैं पासपोर्ट देकर, तो हमें अपने आचरण में वो भाव भी लाना होगा जो सेवा के साथ जुड़ा हुआ है। और सेवा के साथ, जैसे मैंने कहा, सबसे पहला जुड़ा हुआ भाव है विनम्रता, कि जो हमारे दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया उसको हम हड़काएंगे नहीं, उससे हम विनम्रता से बात करेंगे। जो भी तकलीफ है, जो कमी है, बाधा है, वो हम उसको बताएंगे, लेकिन विनम्रता से बताएंगे। सेवा खिले माथे की जाती है, माथे पे शिकन डाल के नहीं। माथे पे शिकन डाल गई सेवा कभी फल नहीं देती, खुशी से की गई सेवा फल देती है। इसलिए अगर सेवा शब्द हमने रखा है तो सेवा का भाव भी हमें अपने अंदर लाना होगा। बहुत सुधार हुए हैं, नंबर भी बहुत बढ़ा है, हमने बाहर की संस्थाओं का सहयोग भी लिया है जिसके कारण चीज़ें आसान भी हुई हैं, लेकिन बहुत कुछ करना बाकी है, क्योंकि विदेश मंत्रालय का 90% हिस्सा तो विदेशों से संबंधित है। विदेशों से संबंध बढ़ाने में, विदेशी अतिथियों से मिलने में, स्वयं विदेश जाने में, लेकिन 10% वो गतिविधियां जो आम आदमी से वाबस्ता हैं, उसमें सबसे ऊपर आती है पासपोर्ट सेवा। विदेश मंत्रालय में कुछ बदला है या नहीं, ये आम आदमी जिन सेवाओं से देखेगा उसमें पासपोर्ट सबसे अहम है। अगर उसको ये जानकारी मिल जाए कि उसका पासपोर्ट आज कहाँ पड़ा है और कितने दिन उसमें लगेंगे, तो वो बेचैन नहीं होगा। हम उसे आते ही तुरंत पासपोर्ट पकड़ा दें, ये नहीं हो सकता, लेकिन हम उसे ये तो बता सकते हैं कि तुम 30 दिन के बाद ही हमसे संपर्क करना या 40 दिन बाद ही हमसे संपर्क करना, जिसे कहते हैं स्टेटस की जानकारी। अगर हम स्टेटस की जानकारी देने का आज की टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए रास्ता बना दें कि जैसे वो ऑनलाइन एप्लीकेशन देता है, इसी तरह से वो खोले तो उसको पता चल जाए
कि आज मेरा पासपोर्ट कहाँ पड़ा है और कितने दिन बाद मिलेगा, तो उतने दिन वो चैन से बैठेगा। उसी दिन आएगा जिस दिन आपने उसको कहा है आने के लिए। लेकिन जब जानकारी नहीं मिलती, सबसे ज़्यादा बेचैनी अगर किसी चीज़ में होती है तो वो जानकारी के अभाव में होती है। और मुझे लगता है कि आज जिसे हम सूचना का युग कहते हैं, जहाँ संचार क्रांति हुई है, जहाँ केवल अपना डेटा अपडेट करके हम लोग उसको जानकारी दे सकते हैं, हम उसे इस बेचैनी से बचा सकते हैं। मुझे अच्छा लगा कि डॉक्टर स्वामीनाथन ने अपनी बात ख़त्म ये कहते हुए की कि जैसे हमने यहाँ उस दिन एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन किया, आप सब भी अपने यहाँ ये करिए। आप सीधे जुड़े हैं। शायद मेरी उस मीटिंग में केवल वो जानकारियाँ मेरे पास आई जो मुझे एमपीज़ ने दी थी, या मेरे ट्विटर पर जो लोग लिख कर बताते हैं, या किसी ने मुझे शिकायत के तौर पे बताई थी। लेकिन आप सीधे वाबस्ता हैं। आपको ये भी मालूम है कि ये जो शिकायत यहाँ हमारे सेंटर में सबसे ज़्यादा आ रही है, इसका समाधान कैसे हो सकता है। इसलिए मुझे ये लगता है कि आज का ये दिन बहुत सार्थक होगा यदि यहाँ से जाने के बाद आप अपने अपने ऑफिसेज में बैठ करके एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन करें और स्वयं में तय करके बताएं, जहाँ अच्छी सेवाएं हुई हैं वहाँ क्यों हो सकी हैं, उनका अनुकरण करें हम। लेकिन जहाँ नहीं हो पाई हैं वहाँ क्यों नहीं हो पाई हैं, उनके बारे में तय करें हम, और आप हमें लिखें। मैं इसके बाद एक और बैठक करने वाली हूँ, क्योंकि सारा कुछ सुधार होने के बाद भी मैं एक चीज़ पर पहुँची हूँ कि आज भी हमारी पासपोर्ट सेवा बहुत संतोषजनक नहीं है। लोगों की तरफ से जो फीडबैक आता है वो जिस दिन ये आ जाएगा कि साहब ये नहीं कि सुधार हुआ है, ये आ जाएगा वी आर वेरी मच सेटिस्फाइड विद योर सर्विसेज, जिस दिन ये आ जाएगा ये लक्ष्य है मेरा, ये मयार है जिस पर हमें पूरा पहुंचना है। इसलिए मैं आपसे कहती हूं कि अपनी सेवाओं को परफेक्ट करने के लिए समय पर लोगों को पासपोर्ट मिल जाए, वो बेचैन ना हो, वो शिकायतें ना करें। इस स्थिति तक हम कैसे पहुंच सकते हैं, इसके लिए आप अपने अपने यहाँ पर ज़रूर एक सेशन करिए ब्रेनस्टॉर्मिंग, और उसमें हमें बताइए कि क्या क्या चीज़ें हमें और करनी चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ मंत्रालय की तरफ से जो भी आपको चाहिए होगा वो हम प्रदान करेंगे, लेकिन हिंदुस्तान के लोगों को ये शिकायत नहीं होनी चाहिए कि हमने पासपोर्ट दिया और जितना समय हमें कहा गया था उतने में नहीं मिला। सरकार बदली है और सरकार बदलने का लोगों को पता चले वो वही सेवाएं हैं जिनसे लोगों का वास्ता पड़ता है। बड़े काम आप क्या कर रहे हैं उनको कोई अखबार में पढ़ लेगा, कोई टीवी पे देख लेगा, लेकिन मैं जिस काम से वाबस्ता हूँ क्या मुझे कोई लाभ मिला, क्या मुझे कोई राहत मिली, क्या मुझे मिलने वाली सेवा में कोई परिवर्तन आया, ये मयार है आम आदमी का बदली हुई सरकार को देखने का। और इसीलिए गति बढ़ानी है, कार्यकुशलता बढ़ानी है, स्पीड और एफिशिएंसी, ये दोनों चीज़ें अगर इन सेवाओं में बढ़ जाएंगी तो लोगों की शिकायतें दूर होंगी। मैं चाहूँगी कि अगला पासपोर्ट सेवा दिवस जब हम यहाँ मनाने के लिए आएँ तो इससे ज़्यादा लोग पुरस्कार लेने वाले हों, लेकिन हर ऑफिस ये कह सके कि हमारी अब तक की जो उपलब्धियाँ थीं उससे कहीं ज़्यादा उपलब्धियाँ हमने इस वर्ष में प्राप्त की हैं और कोई कमी हमने नहीं छोड़ी है, कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है हिंदुस्तान के लोगों की सेवा करने में। हमारे अपने अपने ऑफिस से आपको मैडम कोई शिकायत नहीं मिली होगी और वाकई मैं सर ऊंचा करके कह सकूं कि जो मयार मैंने रखा था उस मयार पर मेरे अधिकारी पूरे उतरे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों को पुनः बधाई देती हूं और आप अपने काम में सफल हों इसकी शुभकामनाएं देती हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Thank you, Madam, for your inspiring words. Now I request our Chief Passport Officer, Shri Muktesh Kumar Pardesi, to kindly extend his vote of thanks. माननीय विदेश मंत्री, आदरणीय विदेश सचिव, विशेष सचिव सीपीवी, गणमान्य अतिथि, पासपोर्ट अधिकारियों, मीडिया के मित्रगण, देवियों और सज्जनों, सबसे पहले मैं आज के कार्यक्रम पासपोर्ट सेवा दिवस के मुख्य अतिथि माननीय विदेश मंत्री का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने अपनी तमाम व्यस्तता के बावजूद
अपना बहुमूल्य समय निकाला और आज इस मौके पे देश के सारे पासपोर्ट अधिकारियों को संबोधित किया। पासपोर्ट आज एक महत्वपूर्ण जन सेवा है। मैडम, आपके नेतृत्व में इस साल हम 1 करोड़ पासपोर्ट जारी कर सकें, ये हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य होगा। संख्या के साथ ही आपके निर्देशों के अनुरूप सारी सेवाओं में गुणात्मक परिवर्तन हो, हम सेवा भाव के साथ नागरिकों को पासपोर्ट दे सकें, इस दिशा में हम अथक प्रयास करेंगे। केंद्रीय पासपोर्ट संगठन और देश के तमाम पासपोर्ट अधिकारीगण इस नेक काम में प्रतिबद्ध रहेंगे, यह हमारा संकल्प है इस पासपोर्ट सेवा दिवस पर। विदेश सचिव श्रीमती सुजाता सिंह और विशेष सचिव श्री आर स्वामीनाथन धन्यवाद के विशेष पात्र हैं, जिन्होंने हर कदम पर हमें राह दिखाया है और अपना बहुमूल्य समर्थन देकर आज हमें यहाँ तक पहुँचाया है। पासपोर्ट सेवा की इस यात्रा में टीसीएस के आला अधिकारियों और तमाम सहयोगियों का भरपूर सहयोग मिला है। पासपोर्ट सेवा आज देश में पीपीपी मॉडल का एक सफल उदाहरण है। सीपीवी डिवीज़न के तमाम सहकर्मियों के अथक कार्य की मैं सराहना करना चाहूँगा। आज के गणमान्य अतिथियों ने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पासपोर्ट दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद।